Shanila, ASG at USEF Ji, we are live. Please Pakistan. start, Samana. Hello, Assalamualaikum everybody, and welcome back to our alumni series that we do every year. As you all know that we are accepting ASG applications till 31st of January 2023. I am Samana Qasim and I am Alumni Outreach Officer for Sindh and Balochistan. And today I will be hosting a session on ASGs where alumni are going to share their experiences. These alumni were granted our ASG programs and they worked with us. ASG is our flagship program, which is administered by the US Mission and the Pakistan-U.S. Alumni Network, and ASG aims to strengthen mutual understanding between the Pakistani and American people and encourages alumni to leverage their exchange program learning to put ideas into action to create meaningful change. So if you are a member of Pakistan-U.S. Alumni Network, you would know about alumni small grants, and I'm sure you all are very excited to know about it and very excited to apply because 31st January 2023 is the last date of accepting the grants of the proposals for the current cycle. Right now, I have 3 grantees from the previous cycle who received ASGs. I have, first of all, Miss Najmo Seher from KP, and her ASG was Fast Track Your Business Growth. And then I have Mr. Nazir Ahmed from Quetta, who did his ASG on using Art ESL classroom program, professional development workshops. And then I have Miss Atia Abbas from Karachi, Getting Your Mojo On, a citizen journalism course for young adults. So as I have tried to keep it as diverse as possible, I have and if you, as you can see, our topics, they are also very diverse. So I would first request alumni Ms. Sahar to talk about her ASG and tell us about herself. Thank you. Thank you, Samana. Assalamu alaikum everyone and a very good evening to all. मेरा नाम नजमु सहर है और मैं केपी में हजारा रीजन से बिलोंग करती हूँ. मेरा job is to write grant proposals for my company. So I work with an organization with the name Tech Valley Private Limited, जिसमें मैंने एक 3.5 years तक I have helped स्टार्टअप्स जिनको मैंने ग्रो करने में हेल्प किया था, इंक्लूडिंग 7 women led startups from different regions, from the different area of the region. So and I get a chance to go to the professional fellows program with University of Oklahoma. It was scheduled in 2019, but due to the COVID I have to attend a part of that program virtually. And I was a bit disappointed because this fellowship program was one of my biggest dreams, because I know a lot of alumni, I get a chance to work with them, but luckily I get a chance to visit for that program in 2022 August. So it was an amazing experience. I've met a lot of mentors and startup in the American ecosystem that really motivated me. So when I get back, I heard about this alumni small grant on the social media, but I was a bit already aware about that because I have worked with one of the alumni, Miss Maria Umar. She was one of the very famous personality of the KP. So I have worked with her on her project as an employee. That was also an amazing experience. And I am a woman, and all of you people know that KP has a lot of cultural constraints on the women. कि आपने बाहर नहीं जाना, आपने काम नहीं करना. So I always felt that I should do something for other women. I should be a role model. I should help them, that if I can be here, I can do something so they can also do that. So this is the thing that has motivated me to go for that fast track your business growth program that was specially designed for women-led businesses.
So it was really amazing experience, and I would like to share more about that. Thank you so much, Samana, for making me part of this session. Sure. Thank you, Seher. Nazir Saab, would you like to talk about your ASG and a little bit about yourself and your exchange program, please? Nazir Saab, आप म्यूट पर हैं. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Nazir Ahmad. I am from Balochistan. I am an e-teacher alumnus. My small grant was using arts in ESL classroom professional workshop. I just want to share my experience. In previous cycle, it was my third approved alumni small grant application. The alumni small grant application process often gives me confidence in describing what I am good at or how I was different from someone else. My first alumni small grant application was approved on the first attempt. I did not know a lot about the alumni small grant application process, but the guidelines given in the application truly helped me out to write a good grant proposal. The experience not only helps me in writing grant applications, but also encourages me in writing professional applications. Yesterday, I have received an email from the Atlas Crops, a United States based non-profit organization to facilitate communication among international leaders that I was accepted to the Virtual Leadership Institute. So I encourage all the alumni to gain confidence and come up with some new ideas to contribute to their communities. Thank you. Thank you, Nazir Saab, and congratulations. Now I have Atiya. Would you please like to talk about your ASG, a little bit about yourself and your exchange program, please? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अतिया है एंड मैंने भी इस पिछले साइकिल में अलमनाई स्मॉल ग्रांट के लिए अप्लाई किया था. मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गई थी 2013 से 2015 तक एंड उसमें मैंने जो जर्नलिज्म का जो हमारा प्रोग्राम था, जो हमें मिजोरी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में जो मुझे भेजा था, उसी का मुझे थोड़ा अप्लाई करना था. जब मैं वापस आई, मुझे शायद इतना टाइम लग गया अलमनाई स्मॉल ग्रांट अप्लाई करते करते, बिकॉज मुझे एक्चुअली बहुत गौर से सोचना था कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट को करना क्या है, लाइक मुझे व्हाट डू आई वांट टू डू विद दिस ग्रांट दैट आई विल बी गिवन. तो जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने बहुत सोच आई टुक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम अदर अलुमनाई एज वेल, एंड उसकी वजह से आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स मैं बहुत इंकरेज करूंगी कि प्लीज दूसरे अलुमनाई के साथ आप कोलैबोरेट करें एंड देन अप्लाई फॉर योर ग्रांट, क्योंकि आपके चांसेस मिलने के ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज you're already working with the people in the network, right? So that was something. So मेरा पूरा प्रोजेक्ट मोबाइल जर्नलिज्म पे था और मुझे जो है स्टूडेंट्स को जो है बेसिकली इम्पार्ट करना था कि वो अपने मोबाइल पर ही किस तरह जो है टीच कर सकते हैं, वो अपने मोबाइल से ही स्टोरीज कैसे शेयर कर सकते हैं. तो वो मेरा पूरा प्रोजेक्ट इसके बारे में था. मैं आगे उसके बारे में आगे भी शेयर करूँगी. थैंक यू अतिया. तो चलें अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमने ये सेशन रखा है. सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ऑल दैट हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट ASG? आपने अनाउंसमेंट कहाँ सुनी, कैसे सुनी, आइडिया कैसे आया? तो कौन स्टार्ट करना चाहता है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी. चलिए Yes, ठीक है, नज़ीर साहब आप स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली जब मैं US से रिटर्न हुआ था इन 2013 नवंबर था, तो 2014 में शुरू में मुझे मौका मिला रीयूनियन कराची में. तो आई लर्नड अबाउट अलुमनाई स्मॉल ग्रांट एप्लीकेशन. सो जैसे ही मैंने इसका नाम सुना और रीयूनियन में, तो मैंने अपने लीडरशिप से वह प्रेसिडेंट उस वक्त हमारे डॉक्टर जवाद था, तो मैंने आइडियाज़ शुरू करना उसके साथ शेयर करना शुरू किया कि हाउ टू अप्लाई एंड कौन कौन से आइडियाज़ जो है हम डेवलप कर सकते हैं. तो डॉक्टर जवाद ने मुझे इनकरेज किया. तो उसी वक्त मैंने जब हम क्वेटा आए तो आई स्टार्टेड राइटिंग प्रपोज़ल. तो मैंने प्रपोज़ल लिखना शुरू किया और एक कंप्लीट एंड बुक बना दिया
कि और फिर मैंने इस पे अप्लाई किया और जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हमारा जो अलमनाई स्मॉल ग्रांट था वो अप्रूव हुआ. That's nice. Atya, would you like to go? How did you know about the small grants? Okay, so I was aware of the small grant program after I also came back. Like आप alumni portal पे register करते हैं तो then आपको updates आना शुरू हो जाती हैं. But I think since it took me मैं 2015 से वापस आई थी. But अगर in 2022 मतलब I had a clear idea about what I wanted to do and I approached the implementing partner टू वो जो भी IVLP के अलमना हैं तो उनको मैंने जो है साथ ऑन बोर्ड ले लिया तो इट वाज मच इजियर और क्योंकि आपके पास एक बहुत सारी कैपेसिटी भी होती है टू डू एंड अनदर थिंग इज लाइक बिकॉज आई वाज वर्किंग फॉर द लिंकन कॉर्नर मुझे एक अंदाजा मुझे ना आई कुड मतलब मुझे एक आइडिया होने लगा हाउ आई कैन ऑल कम टुगेदर बिकॉज द लिंकन कॉर्नर आई हाईली इंकरेज कि अगर आपके शहर में लिंकन कॉर्नर है तो आप प्लीज उसको यूटिलाइज करें फॉर योर अलमनाई स्मॉल ग्रांट एक्टिविटीज बिकॉज वहाँ बहुत रिसोर्सेज हैं फॉर यू टू यूज एंड बहुत आसानी भी हो जाती है बहुत सारी चीजें अरेंज करने में बिकॉज लिंकन कॉर्नर अलमनाई के लिए सबके लिए है बट अलमनाई को लिए ज्यादा आसान हो जाता है उनको रीच करना एनीवे तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो एंड सिंस मुझे पहले से पता था बट लाइक अगर आपका आइडिया थोड़ा क्रिस्टलाइज फॉर्म में क्लियर होता है तो आई थिंक इट्स इजियर टू अप्लाई. Right. Thank you, Atya. So as Atya talked about portal registration, that is one of the most important thing for alumni, for ASG application. And this also increases alumni to alumni connection, and it helps you all to build a better network. Sahar, would you please like to talk about your ASG and how do Okay. I get a chance to work with another alumni. So she has made me part of that program to do some outreach and marketing because I have an experience of working with the women. So she engaged me in that program. From there, I get to know about that there's something like this alumni small grants. So I digged it out. I've sent emails to a couple of people that how I should go, and then I get an email where they have guided me that how you have to go and sign up to the portal. And then using social media, then I came across a grant, and then I have just crafted suddenly an idea that yes, I should try this thing. And as I've already mentioned, that I really want to empower the women of the community. So that's why my core focus was to work on women at that part. So this is how I get to know about that. And as per my experience in having conversation with other alumni, mostly people don't know about that there's a portal. There are kind of two portals. That is, one is Pakistan-U.S. alumni network, and there's an international as well. So yes, this is something I think we should give more awareness to the other exchange fellows that there is something that they can do in their country and in their community for the people. Yes, thank you, sir. That is why we are conducting these sessions so that other alumni get to know about it. And we are highly encouraging all the alumni to register in the PON database. Once you register in the PON database, there are unlimited opportunities, very, very healthy activities that are waiting for you, but you only get access to them once you become a registered member. So now I would like to ask all three of you that how was your experience applying for the ASG and how long did it take from application to implementation? If you can walk us through step by step that what can a grantee expect and how to tackle if you have any tips or tricks that you would like to share with your fellow alumni to make it easier. Who would like to go first? I want to go first on this. Okay, sure.
Okay, so it was kind of an amazing experience. The application format was very detailed and nice. It was nice, good couple of questions. And when you go to the portal, there are guidelines available on the portal, and you can like easily craft your idea once you have the idea and you know what impact you want to create. So then you can come up with this thing. And another thing that Atya has already mentioned, that always involve maybe some other exchange fellow to create an impact, a bigger impact in the society, because the network can be made strong only if you can talk to other people in your network. So I think this is one of the major tip. And the second tip is about make your ask very clear. It is always said that you should know it why you are doing this thing, what impact you want to create, and this should target your community. So it was very amazing experience for me. It took quite long. Probably I have applied the application in January, and then I get the approval of my grant in August, and I started my project in August till October. So it was a long awaited journey, but yes, when you do something, when you create an impact in the society, so it's one of the best feeling one can have. Thank you. Also, I would like you to share about the online form. That how was that experience? Was it easy? Was it difficult? Does having an idea and a clear idea help fill the form? For me, it is. I think it may vary individual to individual. If you are more easy in using the portals, filling the application forms, as I have already mentioned, that this is my forte to write grant proposals. So probably it was very easier for me Right. rather than other people. So Yeah. yeah. So, but I So enjoy now it. people will reach out to you, Seher, since you Yes. have mentioned it. So I think there will be a lot of alumni that who would want to reach out to you. Happy to help So, anyone in the network, but if I think it's quite easier version of any grant proposal, so it's easier for me. I don't know about Atya and Nazir how they feel, but it's easier for me. yeah. Athiya, would you like to या say? मैं बहुत encourage करूंगी कि आप लोग like start early, like अब जैसे application cycle announce हो गया है 31st की, मतलब जरूरी नहीं आप 30th की रात को बैठ के मत भरिएगा, it's going to exhaust you. मतलब Thank you for saying that. please don't do that. It मतलब backlog create हो जाता है portal में, it's pretty panicky, so don't do that. I think what आप क्या like मैंने जिस तरह किया था, broke it down into steps, right? I wanted to be like अच्छा हम लोग जो because the form is pretty clear, लेकिन अपने project के goals, objectives, उसके sustainability वो सब सोच के बैठे हैं. You know, मतलब don't just be like and also I would highly recommend कि think small. Yes, मतलब हम सबको दुनिया बदलनी है, but that won't happen with 150 people. I kept my targets really small, like 30, 15 people, 20 people, 30 people, and I was able to achieve those because realistic थे ना, they were realistically set. And yes, लोग application जो format का पूछ रहे हैं वो it really just helps you outline के आपके goals क्या हैं, आपकी project की sustainability क्या है, फिर आपकी project की activities क्या हैं. Now, if it's a workshop that you have designed, जैसे मैंने किया था, मैंने एक workshop का जैसे होता है ना, day 1 ये होगा, day 2 ये होगा, sorry, session 1 ये होगा, session 2 ये होगा, session 3 ये होगा, and then हर session के बारे में एक छोटा सा descriptor था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा. मतलब it also in the process of writing this, आप लोग भी बहुत clear हो जाएंगे कि ये मेरा goal ये है. और अच्छा, in the beginning, in the project justification, मतलब थोड़ी सी थ्योरी के साथ बैकअप करें कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं. लाइक आई यूज्ड करंट मीडिया की थ्योरी एंड करंट लाइक जो हमारा सिनारियो है ऑफ किस तरह कवरेज होती है न्यूज़ मीडिया में, और जर्नलिज्म किस तरह इम्पैक्ट हो रहा है लैक ऑफ बजट कट्स की वजह से एंड ऑल दैट. तो वो सारी चीजें मैंने अपनी प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन में दी थी, बिकॉज देन आपके
पूरा पूरा प्रोजेक्ट करने का एक फायदा बनता है, एक जो है एक फाउंडेशन बनना शुरू हो जाता है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं. एंड सो आई वुड सजेस्ट लाइक 3 थिंग्स: स्टार्ट अर्ली, सेट रियलिस्टिक टारगेट्स, एंड थर्ड, back it up with theory. Thank you so much, Athiya. These three, I think this is the best till now that I've heard from an alumni grant ASG grantee, and I hope you all also listen to it and note it down when you are writing your ASG application. Yes, Nazir Saab. एक्चुअली जो एप्लीकेशन के जो फॉर्मेट है वो ज़्यादा फ्रेंडली हैं. आई ऑलवेज फाइंड इट फ्रेंडली बिकॉज जब मैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाता हूँ तो मैं दो अहम चीज़ों को कंसीडर करता हूँ, दैट व्हाट इट डज फॉर अलुमनाई एंगेजमेंट एंड व्हाट इट डज फॉर कम्युनिटी वेयर आई वर्क. तो ये दो क्वेश्चंस को या दो चीज़ों को मैं देखते हुए मैं कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि आई ओपन ट्राई टू कम अप विद न्यू आइडिया इन माय ओन फील्ड ऑफ स्टडी. थीम के बारे में ये है कि मैं एक न्यू आइडिया डेवलप करता हूँ कि फिर इसके बाद आई ऑलवेज कंसिडर हाउ माय प्रोग्राम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मीट द अपॉन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन अ ब्रॉडर सेंस. तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा जो प्रोग्राम के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पांग के गोल्स के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मीट कर रहा है या नहीं. एंड द थर्ड थिंग्स आई डू दैट आई Nazir आप Saab, आप म्यूट mute हो गए. एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ. मैं ऑन द स्पॉट एक्टिविटीज़ नहीं लिख रहा हूँ, एंड फॉर दैट आई क्रिएट एंड डिज़ाइन अ कंप्लीट मैनुअल एंड बुक बिफोर द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन से पहले मैं सारे चीज़ों को पढ़ता हूँ, स्पेशली जो गाइडलाइंस हैं एक एप्लीकेशन में और जो एक्टिविटीज़ है उनको जो डेवलप कर रहा हूँ, तो सारे के एक मैनुअल या एम बुक बना देता हूँ कि कौन कौन से एक्टिविटीज़, कौन कौन से इवेंट्स मुझे रखने हैं. एंड द लास्ट थिंग इज दैट इज बजटिंग. बजटिंग में ये कर रहा हूँ कि बजट प्लानिंग में आई ओपन मैं बजट अपन जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ वो रिसोर्सेज पे स्पेंड कर रहा हूँ रादर देन वेन्यू और फूड. यानी फूड और वेन्यू पे मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता हूँ. एंड माय फोकस इज़ ऑलवेज ऑन रिसोर्सेज. जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, जो जो रिसोर्सेज मैं वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन रिसोर्सेज पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. तकरीबन मुझे जो फीडबैक मिला है फ्रॉम फोन के जो ये यूएसपी से, तो वो ये हैं कि वो ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस दे रहे हैं. मुझे फीडबैक ये मिला है कि हम ज़्यादातर अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारा प्रोग्राम के गोल्स है, वो हम फोन के गोल्स के साथ मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Thank you so much, Nazir Saab. And yes, this is a very good point. Please keep in mind the US mission goals that you all know, that you all are told before going to your exchange programs. And here I would like to address a few questions, a little information that I would like to give. That yes, this recording will be available on our Pakistan-U.S. Alumni Network Facebook page, and you all can listen to it whenever you want if you did not listen to it live. And there seem to be questions about application format. Our next session is on January 18th on how to fill out the application form. In this session, our dedicated team will be only talking about application form and will walk you through the entire process. And also that will be on 18th of January. We will also make announcements. And somebody asked me if there is age restriction. So no, there is no age restriction. You just have to be a registered member in the Pakistan-U.S. Alumni Network, and that's how you can apply for our small grant. So my next question would be from the grantees, that how long did the entire process take? And also,
how did you decide the length of your project and कोई timelines थी आपके पास? किस हिसाब से आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस रखी और ये डेट्स भी आपको अवेलेबल थी या नहीं? नजीर साहब? Actually, ये जो can you hear me? जी 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 जी। जो प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट जो फ्रेमवर्क थी हमने पहले ही से वो एप्लीकेशन फॉर्म में भी पूरा एक टाइमलाइन दिया हुआ था कि क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक प्रोफेशनल वर्कशॉप था, तो उसके लिए मैंने 2 वीक्स वर्कशॉप्स था और मैंने तकरीबन ये पूरा करना था विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स में, क्योंकि पहले सारे चीज़ों को सेटअप करनी थी और मीटिंग्स थे और फिर टीचर्स को टीचर्स की सिलेक्शन वगैरह थी और मीटिंग्स थी। तो ये फिर दरमियान में ये हुआ था कि फिर ये था कि हमारे इलाके में स्पेशली बलूचिस्तान में फ्लड आया हुआ था और फ्लड से जो प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन था वो मुतासर हुआ। बट आई कनेक्टेड जैसे मैंने ऑफिसर्स या यूएस एम्बेसी से बात की तो उन्होंने मुझे और ज़्यादा टाइम दिया कि आप इसको कर सकते हो और इसमें चेंजेस ला सकते हो। तो आई जस्ट से दैट जो टाइमलाइन हम रखते हैं, इफ समथिंग अकर्स, अगर कोई चीज़ इस तरह वाक़या हो रहा है एंड उसको उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और जो पूरा एक कंप्लीट फ्रेमवर्क हमें दिया जाता है एंड दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड उसको बहुत फ्लेक्सिबल होता है और हम उसमें चीज़ें जब किसी भी या इस तरह नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह आते हैं या कोई इस तरह चीज़ वाक़या होता है एंड वी कैन डू चेंजेस in our timeline as well. So, Nazir Saab, if I'm not wrong, your application was for 4 weeks, right? जी। Yes, and Atiya, yours was 13 weeks, right? It was basically the sessions themselves were 6 weeks and हम लोग का भी एक हफ्ता डिले स्टार्ट हुआ था बिकॉज कराची में बारिशें बहुत इंटेंस जी थी। जी। मैंने अपने पार्टिसिपेंट से पूछा अभी कि आप लोग को इस वक्त स्टार्ट करना है, उन्होंने कहा इतनी बारिश हो रही है हम नहीं आएंगे। तो आई थिंक मतलब थोड़ा मतलब डू आस्क योर पार्टिसिपेंट्स राइट इफ इट्स फीजिबल फॉर देम, वरना आपकी प्रोजेक्ट टाइमलाइंस हैं एंड यू नो जस्ट फोर्सिंग देम टू हैपन। मतलब एक हफ्ता डिले वाज जस्ट फाइन, वी वर एबल टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज just fine. So did you like Pon was flexible with all this, keeping in mind the geographical conditions of your city and everything? Oh yes, ये बात बिल्कुल कहूंगी कि the team is extremely supportive. आप लोग उनको ईमेल कर दें, मैसेज कर दें कि ये हो गया and everyone is just very very supportive और आप लोग prompt response भी आता है। Thank you. Sir, would you like to add? I am sorry, I cannot recall your project duration. It was around 4 months. It was mentioned in the application that we have to design the whole activities within the 4 months. Yeah, yeah. So during the implementation and all, आपने कुछ experience face किया, कोई hardships face की, keeping in mind that you were conducting the project in KP? Would you like to share something with our KP alumni that क्या-क्या हो सकता है और आपने किस तरह tackle किया? सबसे बड़ी चीज तो आई वाज वर्किंग विद वुमेन, तो उनको फॉर द लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड रखना। दूसरा, आई हैव प्लान्ड द प्रोजेक्ट्स विद द ब्रेक्स, कि मैंने कंटिन्यूअस वर्कशॉप्स नहीं रखी थी। आई हैव बेसिकली डिजाइन्ड मिनी an incubation program where women can come, जब वो आके वो हमसे हर चीज सीखेंगी कि how to market their product, how to बुक कीप देयर फाइनेंशियल्स, बिकॉज हम अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि फाइनेंशियल्स में हमारे लोग बहुत वीक होते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो yes, after completing the project maybe I was realizing I should do it in a one go. मैंने ब्रेक्स बहुत दिए थे बीच में, so it was quite challenging to keep the people motivated
उनको फॉलोअप्स बहुत ज़्यादा करने पड़े कि जी आपने आना है. Yes, luckily there was no weather challenges, but yes, there was connectivity challenges. So हमने online I think सिर्फ 2 ही sessions करवाए थे, बाकी हमने on site ही किए थे. And the response was good from the women. लेकिन हमारे इलाके में थोड़ा सा खवातीन को बाहर निकाल के लाना was the major challenge. And now I look at it कि हमें खवातीन को या लोगों को ऐसी चीजें सिखाने की जरूरत पड़ रही है कि वो घर से बैठ के काम कर सके, so that उनको बाहर ना आना पड़े. So this is what I felt for the society, and that's why I have designed this project. Bilkul. Thank you so much, Seher. And here I would like to just address a few questions that I can see on the page. First of all, हमारा alumni Pakistan alumni network.org/grants का link आपको दिया हुआ है pinned comments पे भी and in the description of the video. And also we have two themes. Two stream of themes, we can say. One is special themes, and this time the special themes are STEM, cybersecurity, track 2, Pakistan and India programming, American Studies, Higher Education University partnerships, human rights, gender, traffic in TIP, sorry, and disabilities, right? So these are the special themes which are open, and इसकी जो grant limit होती है वो up till 10 lakh होती है. Other than that, there are open themes which are also open, and they can be anything except the special theme, which will support you as a leader, which will support the Pakistani youth. And इसकी जो हमारी funding है वो up till 5 lakh होती है. All this information can be seen on the pinned comment in the description box. And there are there are few questions that are actually there are a lot of questions that people are asking. तो थोड़ा सा I would also like to remind you again that 18th January को हमारा next session है, जिसमें application के बारे में बात की जाएगी कि आपको कैसे इसका पूरा fill करना है. And Can I jump in? somebody's asked. Sorry. Can I jump in and say that in preparing for my application, I did attend these sessions. They were all online, so it was easy to attend. मैं बिल्कुल like मतलब ये सेशंस बहुत हेल्पफुल हैं. प्लीज उनको अटेंड करें, बिकॉज आपको ना दूसरे ग्रांटीज का सुन के भी आइडिया हो जाता है लाइक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस और कितना लंबा है, और अबाउट द एप्लीकेशन इटसेल्फ बीइंग लाइक अ बिट इंटेंसिव. यस, मतलब किसी भी ग्रांट प्रपोजल की एप्लीकेशन इंटेंसिव होगी, आपको जस्टिफिकेशन हर चीज की देनी है. तो टाइम निकाल के इसको ना इवनिंग्स में बैठ के थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगी. And also somebody is asking that is the education grant supported? So if you want to work in the stream of education, you can. If it is not under the closed themes, that you can then you can apply it in open themes. And also Nazir Saab also did the grant in the education theme. And if you see, all our grantees did the ASG in very different streams and very different topics. And would you like to talk a little bit about the response of your ASG, and did other alumni try to get in touch, and how did you gather your audience, and did you work as a group? Did you take help from other alumni? How was that experience? Who would like to start? Atiya, would you like to start, please? Yeah, matlab, sure. Again, I would definitely recommend कि please collaborate with other alumni, because देखिए Pakistan-U.S alumni network का basic mandate है strengthening people to people ties. तो वो ही उसी वक्त होगा when you आप दूसरे alumni के साथ collaborate करेंगे. So because my project was related to journalism and I know journalists, and so many the U.S government does send so many
to the US for exchange programs. तो मैंने उनके साथ collaborate कर लिया था. So and secondly about audience outreach, मैंने a couple of my friends वो कराची यूनिवर्सिटी एंड सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर दिया कि ये हो रहा है. एंड I'm very I feel very blessed to say like there was like 100% retention. There was not a lot of drop-offs related to out my program because 5 हफ्ते लोगों का interest, 6 weeks students का interest रखना I feel मुझे थोड़ा लग रहा था कि it would be a challenge, but again this is where the application really helps. Like आपने पहले से अपना plan अच्छी तरीके से बनाया हुआ होगा, it'll be easier to implement also. So yeah, and so yeah, I guess that's my answer. Thank you, Narjisa. एक्चुअली जैसे हमने पहले ही कहा था कि जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस कर रहे हैं, तो 2 चीज़ें जो मैंने बात की पहले ही याद में रखना. द फर्स्ट थिंग वाज दैट व्हाट इट डज फॉर अलुमनाई एंगेजमेंट. तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, प्रपोजल को फिल करते हैं, तो उसमें हम अपने चैप्टर के लीडरशिप और दूसरे अलुमनाई से कांटेक्ट करते हैं ताकि उनके सपोर्ट भी हमारे साथ हों. हम एक ही उसमें अम्ब्रेला में वो लाते हैं ताकि जो भी किसी हमारे ऐसे अलुमनाई है जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफिसेज़ में काम करते हैं, तो हम उनके साथ इन टच रहते हैं एंड दे रियली सपोर्ट. वो हमको सपोर्ट करते हैं. कोई वेन्यू प्रोवाइड करता है, कोई जो अलुमनाई को दूसरे अलुमनाई को उनके साथ कांटेक्ट करते हैं. तो हम जब प्रोजेक्ट कर रहे थे तो आई वाज शेयरिंग, हम अपने सारे प्लान जो है अपने चैप्टर के साथ भी शेयर कर रहा था, दूसरे अलुमनाई के साथ भी शेयर कर रहा था, ताकि हम सब अलुमनाई को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखते और अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करें. तो यहाँ पे हमारे जो अलुमनाई थे वो बहुत सपोर्टिव रहे, स्पेशली और 5 चैप्टर के जो प्रेसिडेंट थे और दूसरे जो लीडरशिप थे वो बहुत सपोर्टिव रहे और उन्होंने बहुत दूसरे अलुमनाई को भी उनके साथ भी कनेक्ट किया. तो ये बहुत अच्छा रहा कि हमने अलुमनाई की एंगेजमेंट को भी इंश्योर किया. Thank you. Seher, please, would you like to share your experience? Yes, I worked with another fellow. She's a Fulbright scholar. So we have planned this project together and we have developed all the training curriculum for the candidates. And she has also participated with me as a trainer come mentor. This is it, and maybe few alumni that I have worked previously that I have already mentioned. So I reached out to them as well. So उनसे feedback लेना is very important because experience जो है मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज होती है. किसी का तजुर्बा आपके सबसे ज्यादा काम आता है. तो it's better कि आप अपने ideas, अपनी चीजें discuss करके then उसको एक final shape दें. To do the outreach for, I'm probably very lucky to have good connections. I am connected with the local chamber of commerce because मेरा business के साथ ज़्यादा वो था. So I was also connected with an influential lady who's herself an entrepreneur and a politician. So I have used them to spread the message out, to motivate the women and come out to get the training. Thank you so much, Seher. Here, I would like to repeat a few details again. 18th January is our application session on the same page at the same time. Don't forget to sign in to that. And also 31st January 2023 is the last day to apply for the current cycle of ASG. As Atia mentioned, please do not start your application on the 30th because that will not give you a very clear idea. So we would recommend you to please see the pinned comment. और उस पे आप जाके please link click करके form को एक नजर देख लीजिए. And also now I would like to ask our grantees that why would you encourage other alumni to apply for ASGs? I mean, thank you for taking out time for this session and doing the ASG, but why would you recommend it? Who would like to go first?
please, whoever. Sure. अम्मा दो बातें हैं। एक ये कि अम्मा अलुमनाई के जो इंगेजमेंट है वो हम इंश्योर करें, एंड दूसरी बात ये है कि अम्मा जो भी वहाँ से यूएस से सीखे हैं, जो भी चीज़ें हमने वहाँ से सीखे हैं अपने फील्ड स्टडी में, वो हम अपने पेलोज के साथ या अपने कम्युनिटी में उसको अपने कम्युनिटी फेलोज के साथ उसको शेयर करें एंड कंट्रीब्यूट और कम्युनिटी एज वेल। और अपने कम्युनिटी जो भी चीज़ें जो जो सर्विसेज हम ऑफर करते हैं तो हम अपनी कम्युनिटी में वो उसको भी स्प्रेड करें, और अपने स्टडी के जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी नई नई चीज़ें हैं हम सीखते हैं, तो हम अपने ही फील्ड में उसको डेवलप कर दें। Great. Seher? I just want to add it like this कि I am a woman और हर औरत के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी लीडरशिप पोजीशन में जाना. So I want to encourage all the women कि आप एक fully funded US scholarship के ऊपर से पढ़ के अगर वापस आए हैं, so yes you are amazing. आपने इतना एक बड़ा सफर तय किया है तो आप आगे भी कर सकते हैं. Now it's your turn कि आप दूसरों को मोटिवेट करें और अपनी कम्युनिटी को अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और अपना कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करें. सो दिस इज द रीजन, शायद ये नेटवर्क इसीलिए बना है कि अब हम एक दूसरे से कनेक्शंस बिल्ड करें, दूसरों को हेल्प कर सकें, एंड मेनी पीपल कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें. सो आई रियली इनकरेज स्पेशली वुमेन कि आप लोग जरूर अप्लाई करें, क्योंकि केपी में स्पेशली बट आई फील कि खवातीन आपको बहुत कम नजर आती हैं इस तरह की कोई एक्टिविटीज करते हुए. सो इट्स डिफिकल्ट लेकिन इतना मुश्किल नहीं है. आप उसको प्लान करके चलेंगे तो यू कैन डू इट. So thank you so much, Samana. Thank you so much, Duan team, for giving me the opportunity, giving me the confidence to come on this platform and talk about my experiences. Thank you so much. Thank you so much, Seher, for taking out time. And Atiya, please. Okay. So मैं बताऊँ इसलिए भी बहुत encourage करूँगी for the alumni small grant is because like there are many reasons like it's easy to get a grant because आप already alumni हैं, आपने काम किया हुआ है अपने field में, all of that. तो basically अगर आपको आगे जाके more funding चाहिए for your projects and all that, तो आपने अगर alumni small grant कर लिया इसका मतलब ये एक pilot project भी हो गया. मतलब आपने बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया दैट आप एक प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं, आपने उसके लिए ग्रांट भी ले लिया एंड ऑल. तो alumni small grant really helps in forming like you know maybe a journey into getting more funding later for आपको अगर जो भी अपना प्रोजेक्ट को लेकर चलना है. तो alumni इसलिए मैं बहुत encourage करूँगी to everyone to apply because आपके पास एक आइडिया है उसको आप मतलब स्केल करके देख लें. एंड देन इफ द alumni small grant is a great opportunity because आपका एक नेटवर्क है जो आपको ऑलरेडी पैसे देने को तैयार है. So definitely go for it. Thank you so much, Seher, Nazir, and Atiya, for taking out time on a Friday afternoon. I know Fridays are also busy, and talking to the alumni about your experiences. It's you all who make Pakistan-U.S. Alumni Network, Pakistan-U.S. Alumni Network. So we are very, very thankful to you. And also, guys, as Atiya mentioned, that ASG basically gives you an idea about how to lead your projects and what to do, and like the pilot is ready और उसके बाद आप उस project के साथ क्या क्या कर सकते हैं and how to make it sustainable. तो ये एक कह सकते हैं कि मतलब एक छोटी सी कोशिश है एक बड़ी चीज शुरू करने के लिए, as we can in a way we can say it. So 31st January 2023 is the last day to apply for small grants in the current cycle, and you can write to us at asg@usefppakistan.org if you have any confusions and any questions. We have two streams of alumni small grant, special theme and closed theme. All the themes are available
in the description में जो link दिया हुआ है website का उसमें, और एक और मैं बस ये कह रही थी कि ये वाली एप्लीकेशन सॉरी ये वाली जो वीडियो है ये अवेलेबल होगी हमारे पेज पर, जिसमें आप जाके इसको बार बार सुन सकते हैं इवन वाइल अप्लाइंग फॉर योर ASG। एंड जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस हैं जो हम आंसर नहीं कर पाए, हमारी जो सोशल मीडिया टीम है दे आर ऑन इट एंड दे आर answering those questions. And also Atya has given the link to her small grant video in the comment section, how it was. If you want, you guys can go and see it there. And even if you have questions from our speakers, you can leave the comment there and they can go and check and answer. I am committing this on your guys on your behalf. So ये था, and yes, thank you so much. Thank you for all your questions and thank you for listening to us, guys. We are looking forward for some good grant proposals this year, and all the questions will be answered, don't worry. And you can write to us at asgpakistan.org if you have more questions. And thanks Seher, Nazir and Atya, and thank you Pakistan-U.S. Alumni Network for arranging this. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Thank you.